अब अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. लेट्स लुक एट द 20 जीके क्वेश्चंस फॉर टुडे. So पहला क्वेश्चन है, when does the election silence period typically commence before voting begins? So we have already done it. It is 48 hours prior to the date of election, the day of voting. Next, Mullaperiyar Dam is a controversial dam between which of the following states? Again, the answer would be D, Kerala and Tamil Nadu. We have already done it, discuss it. Next, what is the main basis for allocating seats to various states in the Lok Sabha? So basically क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं अपन लोक सभा में डिफरेंट स्टेट्स को सीट्स एलोकेट करने के, एंड इट इज पॉपुलेशन साइज. सो आंसर वुड बी सी. Next, what is the maximum number of candidates that a single balloting unit of an EVM can accommodate? So, जो एक EVM मशीन होती है उसके ऊपर बटन्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर मशीन पे कितने बटन्स होते हैं या कितने कैंडिडेट्स को आप नाम प्रेजेंट कर सकते हो? सो आंसर वुड बी 16. सो एक EVM बैलेटिंग यूनिट के ऊपर 16 लोगों के, 16 कैंडिडेट्स के नाम आ सकते हैं. Moving on, which organization is responsible for regulating the pesticide residue limit? So we have already done it. It is Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI. Moving on, Project 75 India or P75I is a military acquisition initiative to procure which of the following? So Project 75 India एक military program है जिसके अंदर अपन particular types of चीजों को क्या बोलते हैं एक्वायर करते हैं फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, एंड यू हैव टू टेल मी व्हिच पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बीइंग एक्वायर्ड. सो इज इट फाइटर एयरक्राफ्ट, इज इट डीजल सबमरीन, इज इट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाइक योर आयरन डोम, और इज इट योर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स? सो आंसर वुड बी डीजल सबमरीन. सो वी आर प्रोक्यूरिंग डीजल सबमरीन फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा टू अंडर आवर प्रोजेक्ट 75 इंडिया. Next, Hezbollah has launched rocket strike into Israel. It is a militant group based in which of the following countries? So we know this, it is Lebanon, the state of Lebanon. Next, which of the following news network has been banned by Israel on grounds of national security? So already we have just discussed it. It is Al Jazeera now. Next, which of the following country has marked 60 years of diplomatic relations with France? And the answer here is China. China के 60 years complete हो गए हैं of completion of diplomatic relationship. And why this has come in news? Because Xi Jinping, who is the president of China, is right now visiting France. Moving on, 10th. सो अब इस बार 4-5 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स के हैं, उसके बाद अपन फिर से इंडियन एक्सप्रेस के क्वेश्चंस पे आएंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डबल स्पेयर हैज वॉन द कैग्लियरी चैलेंज टेनिस टूर्नामेंट? एंड द आंसर इज ए, श्रीराम बालाजी एंड आंद्रे बेगेमैन. Next, who among the following has won the Madrid Open Women's Tennis Tournament? And the answer would be B, Iga Swiatek. So Iga Swiatek has won the Madrid Open Women's Tennis Tournament. Next, which of the following countries team has won the Thomas Cup and the Uber Cup? So अपन ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं थॉमस कप एंड उबेर कप. दीज आर बैडमिंटन बेस्ड टूर्नामेंट. चेंगडू चाइना के अंदर अभी अभी ये कंडक्ट हुए हैं, एंड इट इज द होस्ट सिटी विच इज होस्ट कंट्री विच इज द कंट्री ऑफ चाइना, जिसने मेंस टूर्नामेंट विच इज थॉमस कप एंड विमेंस टूर्नामेंट विच इज उबेर कप को जीता. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द इंडियन सुपर लीग चैंपियनशिप 23-24? एंड द आंसर हियर इज ए, मुंबई सिटी, बाय डिफीटिंग मोहन बगान इन द फाइनल्स. Next question, which of the following country has become the largest importer of Russian crude oil? So again ये बहुत बार न्यूज में आ रहा था कि earlier it was India, but now China has overtaken India as the largest procurer of the Russian crude oil. Next, which of the following publishes the India Employment Report? So 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, Institute for Human Development and ILO, they jointly produce this Indian Employment Report, which means the answer would be D, both A and B. Next, which organization recently declared that COVID-19 is no longer a global public health emergency? So it is a WHO. WHO is the main organization जो declare करता है कि कोई particular disease या illness, is it a pandemic or not, is it a health emergency or not. Moving on, Latin American countries saw a surge in dengue cases. Dengue is spread by which of the following species of mosquitoes? And the answer is B, Aedes aegypti, जो basically dengue के लिए responsible होता है. A blue corner notice has been issued against Prajwal Revanna. Which of the following authorities used this blue corner notice? And the answer would be A, Interpol. अभी just discuss करा है, Interpol is the answer. Next, what is the title of Congress लोक सभा इलेक्शन मैनिफेस्टो? सो कांग्रेस ने जो लोकसभा के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो का है उसका नाम क्या है? सो आंसर वुड बी ए, न्याय पत्र. And the last question, what is the title of BJP's Lok Sabha election manifesto? And the answer here would be Sankalp Patra. So these are the 20 questions for today. I hope to see you in the next class where we are going to discuss the important news headlines from that day newspaper as well as the important 20 GK questions. So thank you and have a very nice day.